So this is the map of the France. Okay, so here we have Paris, Versailles, देखो लेमा, टूर। अच्छा, ये जो यहाँ पर है ये एक मॉन्यूमेंट जैसा दिख रहा है, क्या है ये पेरिस में? So Disneyland. ये डिज्नीलैंड नहीं, ये डिज्नीलैंड नहीं, ये आईफल टावर है। ये आईफल टावर। हाँ, क्या बोलेंगे इसको फ्रेंच में? नहीं पता। टूर दे एफिल। ओके, टूर दे एफिल। सर क्या बोलेंगे? टूर दे एफिल। TOUR दे FELLE Tour de Eiffel. And one destination is here which called as Bordeaux, which is famous for the wine production. Okay, and this is the Toulouse, Paris, and Nice. Okay, these cities are famous for their studies as well. Okay, so the France having a good university and good colleges in these cities. Okay, city बोला मैं, city को मालूम है क्या बोलते हैं फ्रेंच में? city क्या सर? city we called in French is ville. C'est une belle ville. This is good. Yeah, c'est une. Okay, so city we can call as a ville. Okay, ville. Okay, so La Paris, French में La Paris, Bordeaux. Okay, Nice. So these are the famous cities in France. Apart from that, Lille. Okay, Lille, Brussels. Brussels also a famous city or très populaire ville en France. Okay, ये डिज्नीलैंड है और लसीन एंड ओके। सो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री ना, ये इसको फ्रेंच में क्या बोलेंगे जो इसकी बाउंड्रीज हैं? ला फ्रंटियर। देखो ला फ्रंटियर, और ये आपका है सी, ला अटलांटिक, ला इटली। अच्छा, कंट्री हुआ बोलेंगे, कंट्री है एक कंट्री, दिस इज द कंट्री ला इटली, ला इटली, ला लग्जमबर्ग, ला अल्मो, ला बेल्जिक। Okay, country we called in French country as pays. Pays, ville, frontier. Three things we have discussed. Okay, and for you can see over here. You can see over here, no? La Pays de Galles, La Pays de Galles. Okay, L'Angleterre, which is England. ओके, सो ये जो पेई आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पेई का मतलब कंट्री होता है, ठीक है, पेई। ओके, देखो न्यूज मूविंग फर्दर। Okay, c'est petite conversation avec les amis. Okay, avec des amis. Bonjour Corel, bonjour Sébastien. Okay, this is second conversation. Bonjour
Monsieur Garnier. Bonjour, Jean-Marc. Okay. And third conversation is Bonjour, Olivier. Salut, Magali. Okay. And au revoir, Isabelle. Au revoir, Loic. So these different conversation is initial conversation which we use for a greeting only. Okay, to start the conversation. After this, there is a small conversation over here, which is comma. Okay, so which is comment t'appelez-vous? Okay, yeah, comment tu t'appelles? We can inverse this sentence. Okay, so he answered the question. Je m'appelle. This is not a je, it's je. Je m'appelle Sophie et toi? Comment t'appelez-vous? Okay, je m'appelle Sophie et toi? Je m'appelle Luke. Okay, this is a small conversation to start to after greeting the people, greeting the greeting awake army. Okay, so we can start with these sentences. Okay. Okay, there is one thing is written here, qui est, which means qui est means who is this या what is this. Okay, या फिर हम बोलते हैं कैस का बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं qui est. So कैस या फिर qui est, this is the example. Say Corella, this is Corella. Okay, who is this? This is Corella. Okay, in English we can translate. And after this, these are the telephonic conversation we are doing. Okay, Sebastian, there are 5 participants in this conversation. Sebastian, Corella, Olivier, Magali, and Isabel. Okay, Aj, how to do, ask the age and the answer. Okay, tu es Nicolas, quel âge as-tu? So both things are posed as a question, question manner. Okay, tu es Nicolas, quel âge as-tu? J'ai 11 ans. What is the number 11? How old are he? J'ai 11 ans. Can you please tell me 11? Sir, 11. 11-year old. Yes. So he is 11-year-old. So he is confirming. Okay, il y a quelques personnes qui posaient la question, tu es Nicolas? Quel âge es-tu? Après la Nicolas donné la réponse, j'ai 11 ans. It means je m'appelle Nicolas et j'ai 11 ans. So you may write all the things. Pouvez-vous noter la, or you may go through the document. Okay, you can find these material over there as well. Okay, so d'accord. So the article défini et indéfini. C'est l'article défini et indéfini. Okay, so we are having some articles. We are moving to the grammar part, where we will face some article similar as we have seen in the article in English, a, the, and. Okay, a and the. Lekin in French we have articles in 2 forms,
article défini et article indéfini. In article défini,